Today's session is about the art of mime. What is a mime? Mime, if you have seen somewhere, माइम ऐसे जोकर्स जैसे होते हैं जो कुछ बोलते नहीं है, वो बोलते नहीं है, स्टेज पे आते हैं और वो एक्टिंग करते हैं, लेकिन वो सिर्फ इशारे में एक्टिंग करते हैं और वो कोई अलग अलग चीजों की एक्टिंग करते हैं, डिफरेंट थिंग्स, राइट? दे डोंट से एनीथिंग. सो दैट इज द टॉपिक टुडे. माइम. माइम इज a clown, but then the clown doesn't speak at it. So before we start, let's look at the rough meaning of these words. हमारे पास जो आज के words है. So the first words here, I'm going to give you the weak, rough meaning, and then you guys will tell me the proper meaning. Abstract, जो normal चीजों से अलग है, हटके है, जो समझने में आसान नहीं है, उसको बोलते हैं abstract. एटमॉस्फेयर यानी माहौल, कोई जगह का माहौल होता है. कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट यानी जब कोई दो लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट होता है, अनबन होती है, तो वो अनबन को बोलते हैं कन्फ्लिक्ट. या फिर दो चीजें टकराती है तो उस टकराने को भी कन्फ्लिक्ट बोलते हैं. जैसे मेरा एक अपॉइंटमेंट है 2 बजे का और कोई दूसरा काम आ जाता है 2 बजे, तो दोनों चीजें एक दूसरे से टकरा रही है, सो देन देयर इज अ कन्फ्लिक्ट. कंसिडरेबल यानी कहीं सारा, बहुत सारा, दैट इज कंसिडरेबल. नेक्स्ट इज कल्मिनेट. कल्मिनेट का मीनिंग होता है जब आप कुछ करते हो, सोचते हो, प्लान करते हो, वो जब हकीकत में बदल जाता है, यानी उसका परिणाम आता है, रिजल्ट आता है, तो उसको बोलते हैं कल्मिनेट. द नाउन फॉर्म इज कल्मिनेशन. कल्मिनेशन में जब फल आता है, आपकी मेहनत का फल आता है, दैट इज कल्मिनेशन. इफेक्टिवली यानी असरकारक तरीके से, असर के साथ, that is effectively. Emerge. Emerge का सिंपल मीनिंग है उभरना, सामने आना, किसी के सामने आना, लोगों के सामने आना, that is called emerge. Exaggerated. Exaggerated यानी जो कोई बात को हम बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, ज्यादा मिर्च मसाला लगाते हैं, मर्चू मिठू पपराई ने बात करिए, जो हकीकत नहीं है उसको बहुत सारा लंबा चौड़ा खींच के बताते हैं, वो बात को हम exaggerate करते हैं, जैसे मीडिया वाले करते हैं, दैट इज एग्जैजरेट. फ्रेल्टी. फ्रेल्टी यानी कोई चीज जो बहुत कमजोर होती है, वो कभी भी टूट सकती है, तो कमजोर को बोलते हैं, कमजोरी को बोलते हैं फ्रेल्टी. नेक्स्ट इज जेस्चर. जेस्चर यानी हाथ के इशारे, जो इशारे होते हैं जिससे हम बोले बिना कुछ बोलते हैं. ह्यूमरस यानी हास्य से भरा हुआ, जिसमें बहुत हंसी आती है, दैट इज अ ह्यूमरस. लाइक अ कपिल शर्मा शो इज अ ह्यूमरस शो. इल्यूजन यानी माया, या फिर कोई भी चीज का भ्रम जो हकीकत नहीं है, जैसा हमारे माइंड में है और वो रियलिटी नहीं है, तो वो उसका इल्यूजन है. क्या हम लोग एक भ्रम में जी रहे हैं, तो वी आर लिविंग इन एन इल्यूजन. लिटरल. लिटरल यानी शब्द जैसा, जैसा लिखा है वैसा का वैसा, उसको बोलते हैं लिटरल. यानी कि आप हर शब्द के साथ सच पढ़ते हो, दैट इज लिटरल. लिटरल मीनिंग यानी इसका लिटरल ये मीनिंग होता है. मर्ज, दो चीजों को एक साथ मिला देना और एक बनाना, दो में से एक बनाना, उसको बोलते हैं मर्ज. जैसे दो कंपनीज मर्ज हो जाती है, तो उसको बोलते हैं मर्जर. पोर्ट्रे यानी दर्शाना, लोगों के सामने दिखाना, कोई चीज हम लोगों को बताते हैं तो उसको वैसे पोर्ट्रे करते हैं. प्रोमिनेंट. प्रोमिनेंट यानी जो बहुत बड़ा है, बहुत प्रसिद्ध है, नामी है, लोग उसे जानते हैं और वो महत्वपूर्ण है, दैट इज प्रोमिनेंट. कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोमिनेंट लोग हैं. प्रॉप. प्रॉप यानी कोई नाटक, कोई शो के लिए हम जो सामान यूज करते हैं, जैसे हम शादी के फोटो में प्रॉप्स यूज करते हैं. प्रॉप यानी अलग अलग, जैसे बोर्ड होते हैं, है ना, मूछ, टकली मूछों का ऐसे पोस्टर रहता है, तो वो जो सारी चीजें होती है जो हम फोटोग्राफी या वीडियो में बनाने के लिए यूज करते हैं. जैसे आजकल वेडिंग फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोशूट में अलग अलग लोग चीजें पकड़ के खड़े रहते हैं, तो वो चीज एक्चुअली उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, बट दे आर जस्ट देयर फॉर द शो, तो वो चीज को बोलते हैं प्रॉप. रेमिनिसेंट यानी आप जब इमोशनल हो जाते हो और पुरानी चीजों को याद करते हो, व्हेन यू बिकम नॉस्टैल्जिक, दैट इज लाइक रेमिनिसेंट, यानी पुराने दिनों को याद करते हैं, यानी वो चीज आपको कोई चीज की याद दिलाती है, राइट. रिनाउंड, वापस प्रसिद्ध, नामी, बहुत फेमस है, तो उसको बोलते हैं रिनाउंड. और शार्पन यानी कोई चीज को धार लगा, राइट, दैट इज शार्पन.
Okay, so now since you know the meaning, I'm going to ask you the meaning. You guys have to guess the meaning. Let's start with the first one. What is abstract? You will answer it. Anyone? Abstract is here not concrete, related to ideas or feelings. जो ideas से जुड़ा हुआ है वो real नहीं है, जिसको हम touch नहीं कर सकते, तो that is called abstract. जैसे if I say के what is honesty, what is ignorance, what is you know, these are abstract nouns. Abstract noun यानी ऐसे nouns जिसको हम छू नहीं सकते, उसके सामने concrete nouns होते हैं, concrete nouns को हम touch कर सकते. Next is atmosphere. What is the meaning of atmosphere? The feeling of a place. जो माहौल का जो feeling है उसको बोलते हैं atmosphere. What is a conflict? I hope you guys can answer now. M. Right. Conflict is difficulty and opposition. That is conflict. Considerably is I. A great deal, noticeably, तो उसकी जगह बोलेंगे considerate. Culminate, हकीकत में बदलना. Anyone? Culminate is end here. To result in something, to end in something, that is culminate. फल आना, फूल आना, उसको बोलते हैं culminate. All right, effectively, असर कारक. That is called well and successfully. Emerge, हमने अभी किया था emerge, उभरना. Emerge is to appear or develop. Exaggerated, बढ़ाया हुआ चढ़ाया हुआ, बढ़ाया चढ़ाया, उसको बोलेंगे yes, correct. My mouse got stuck. Just a minute. So exaggerate is S, right? To made to seem more or bigger, बड़ा लगता हो, that is exaggerated. जो है नहीं उतना बड़ा. Frailty. H. Very good. Frailty is H. Weakness and lack of strength, that is frailty. Gesture. इशारे. The movement to express a feeling or idea. कोई idea दिखाने के लिए जो movement है, that is called gesture. Humorous, हास्य से भरा हुआ. A. Right, very good. Funny and entertaining. What is illusion? Illusion is E. Expression, appearance of being real but false impression. यानी सच लगता है, that is भ्रम. Literal. Literal is following the exact meaning. जो शब्द है उसी का meaning निकलना, that is literal. Merge यानी उभरना कहीं से V. R combine. Yes. Okay. 15th one, portray, darshana. That is B. To represent or act out. What is prominent? Anyone? Okay, prominent is L. L. Important and major, that is prominent. Prop. B. N. Right? An object used by actors. जो actors होते हैं वो use करते हैं, that is prop. Reminiscent, that is D. पुरानी चीजों को याद दिलाता हो. Reminding of something or similar to something, that is reminiscent. यानी जैसे आप कोई चॉकलेट खाते हो और वो आपको बचपन के दिन याद दिला देती है. Then the chocolate is reminiscent of your childhood days. And then renowned is very famous, so that is famous. And sharpen, धार लगाना, and that is O. And to make it perfect something.
right? So these are the words that we will be seeing today in the reading passage. Let's start with the reading. So today's reading is about the art of mind. All right. और यहाँ पे पूरा पैसेज है fill in the blanks with the words from here. तो हमारे words जो है वो है abstract, conflict, culminate, emerge, gesture, humorous, illusion, literal, merge, prop, reminiscent, renowned and sharpened. ये सारे के सारे words हमने just किए हैं. तो let's look at. Miming dates back to the theaters of ancient Greece and Rome. पुराने जमाने के ग्रीस और रोम के दिनों से माइमिंग का आर्ट चलता है. Mimes होते हैं. Mimes use movements, gestures, and facial expressions to portray a character or an emotion or tell a story, all without words. आपने मिस्टर बीन को देखा है तो वो थोड़ा थोड़ा जो है वो बोलता नहीं है, बने तब तक पूरी कहानी जो है बिना बोले बताता है. So that is a mime. Over the centuries, सदियों से the art of miming grew to include acrobats, props, and costumes, culminating in the fine-tuned art form that people recognize today. तो उसमें धीरे-धीरे छोटे-छोटे बदलाव आए, उसमें करतब वाले acrobats आए, props आ गए, अलग-अलग costumes आ गए, और उसका परिणाम ये हुआ, it culminated into a fine-tuned art form. एक art का एक form बन गया जो आज हम देखते हैं, that we recognize today. Miming can be abstract. It is an idea, not real, right? It is abstract or literal or a combination of the two. दोनों हो सकता है, abstract हो सकता है या literal हो सकता है. Abstract miming जो होता है usually has no plot or central character, but simply expresses a feeling as sorrow or desire. उसमें सिर्फ एक feeling और emotion दिखाता है. Literal miming, on the other hand, tells a story and is often comedic. It is funny. It's often literal and often comedic, using body gestures. इसमें हाथ पाँव के expressions होते हैं and facial expressions to present a main character facing some type of conflict. उसमें उसकी life में कोई ना कोई conflict है in a humorous way. For example, acting out or tug of war without the aid of rope or other props. यानी जैसे वो दो एक रस्सी खींचते हैं दोनों साइड से, तो वो ऐसे रस्सी खींच रहा है लेकिन उसके हाथ में एक्चुअली रस्सी तो है ही नहीं. 20th century style of miming reflects outside influences of the period, most notably silent film. Silent film जो है उसको वो represent करता है, in which actors relied on their ability to communicate thoughts and stories through facial expressions and exaggerated gestures. तो वहां पे वो यही करते थे. क्या करते थे movies में? Two superstars of the silent era, Buster Keaton and Charlie Chaplin, sharpened their miming skills in the theater before using them in movies. और वो पहले mime करते थे. They were mimes. वो पुरानी emotions जो थे, love है, feelings है, sadness है, तो अगर आपने चार्ली चैपलिन की, if you've seen a movie, you can see कि वो कैसे emotions दिखाता है. Both were so successful that they have continued to influence mimes and other live performers long after their death. आज तक लोगों को वो लोग प्रेरित कर रहे हैं. People still consider Chaplin a master of the miming technique, in particular his tragicomic. Tragicomic is what? It's a hybrid word. Tragedy and comedy का combination. यानी उसका एक character था जिसमें वो एकदम गरीब सा भिखारी जैसा होता है और वो फटे हुए कपड़े पहन के हमेशा जाता है. एक कैप होती है उसके ऊपर, like a hat and a stick. So his tragicomic little tramp character, वो character का नाम था Little Tramp, who so effectively portrays human frailty, आदमी कितना frail होता है, through physical comedy also known as slapstick. लोग एक दूसरे को मारते हैं, गिरते हैं, केक मारते एक दूसरे पे. Another 20th century influence on modern miming includes, और दूसरा एक रूप है, includes a renowned French mime and acting teacher named Etienne Decroix. Here in French words, the X is silent like this. So it is called Etienne Decroix, who developed what was known as corporeal mime. What is a corporeal mime?
This art form focused on the body, वो शरीर पे फोकस करता था, showing thought through movement. उसमें माइंड में जो विचार है वो बॉडी पे दिखाता था, and became the prominent form of the modern mime era. उस जमाने का वो बहुत फेमस माइम फॉर्म बन गया. In the 1930s, the crew founded a mime school in Paris, based on corporeal mime. उसने अपनी खुद की स्कूल बनाई. One of his students, a young French named Marcel and Marceau, emerged as what many consider the master of modern mime. और उसका एक स्टूडेंट आज का मॉडर्न माइम का जीनियस बन गया. Marceau added his personal touch, खुद का personal touch, to the art of miming and presented it to the world for half a century on television and in theaters. उसने पूरी दुनिया को टीवी पे 50 सालों तक उसका माइम का टच दिया. Among his well-known illusions, उसने जो बनाए are portrayals of a man walking against the wind. एक आदमी होता है जो ऐसे बहुत तेज हवा आ रही है और उसके सामने वो चलने की ट्राई कर रहा है. And a man trapped inside a shrinking box. यानी एक ही आदमी जो एक shrinking box में फंसा हुआ है, तो उसका पूरा माइंड करते हैं. Marceau also created his own special character, Bip the Clown. उसका कैरेक्टर था Bip the Clown. White faced, उसका पूरा चेहरा white था, and dressed in a. Miming is still taught in dance, drama and acting schools worldwide. आज भी पूरी दुनिया में ये आर्ट को सिखाया जाता है, although it has changed considerably. काफी बदल चुका है since the ancient Greek plays and even since the solo performances of Marceau. Group miming is now in fashion. आपने अगर कोई इंडियन शो देखा है डांस वाला, तो आपने कभी-कभी कुछ परफॉर्मर्स को देखा होगा कि वो थोड़ा हाथ से पूरी एक्टिंग करते हैं. तो वो जो एक्टिंग करते हैं, इट्स पार्ट ऑफ द आर्ट, माइम आर्ट. ग्रुप में जो करते हैं now in fashion and sounds, lighting and other special effects are included to help create the desired atmosphere. तो वो पूरा माहौल बनाते हैं. Current examples include the US dance troupe Philobulus, which merges, दो चीजों को merge करता है, modern dance, acrobatics, gymnastics and mime to create elaborate, complex geometric shapes with their bodies. अपनी body से वो लोग अलग-अलग complex आकार बनाते हैं सब मिलके. And the Canadian Cirque du Soleil, this is also a group of circus people. It's world famous. इनका circus सबसे दुनिया में famous है. Cirque du Soleil, which uses lighting, spectacular costumes and special effects to produce striking illusion. तो ये लोग ऐसे करते हैं, अलग-अलग lighting, costumes और special effect डाल के वो लोग illusions बनाते हैं. So complete the summary using words from the list below. So let's see all the words. All right. Mime is a type of a theater performance that uses dash and expressions to tell a story or show a character. What does it use? हाथ के इशारे. Props. Not props. Gestures. Yes, it is gestures. Uses gestures. There are two types of mime. The first is dash mime, which tells a story and is often dash. कैसा होता है वो पहला वाला? एक होता है, कैसा होता है first one? Abstract. See here we saw the type of mime. तो यहाँ पे लिखा है कि एक होता है literal miming और the other hand tells a story. One is abstract, जिसमें story नहीं होती है, और literal miming में story होती है and it is also often comedic, यानी funny होता है. Funny होता है, story होती है. तो वापस करेंगे now. There are two types of mime. The first is a dash mime, which often tells a story. So what mime now? Abstract. Literal. और वो funny होता है. So it is which is often dash. Humorous. Correct. It makes people laugh. The second is dash mime, which portrays feelings. Now, this one is then abstract mime.
Two influential actors dashed during the silent film era. उस टाइम के अंदर से उभरे वो लोग निकले. They were Charlie emerged. Right. They emerged. That was Charlie Chaplin and Buster Keaton, whose years of experience in the theater dash in miming skills that they were able to use effectively in silent films. तो वो convert होके दूसरे में चला गया. Result होके. Sharpen. Just a minute. Yes, what is the word? Can we start? Yes. Culminate. Culminated, right? So the word is culminated. इसका resulted in. यानी उनकी सालों का जो एक्सपीरियंस था दोनों का, it culminated into miming skills. जो skills उन्होंने silent फिल्म में ट्रांसफर की. Their techniques influenced mimes for many years. The French mime Etienne de Croix developed the form known as corporeal mime. One of his students, Marcel Marceau, became a prominent modern mime. Marceau's dash illusions, उसका जो illusion है, कैसा illusion, जो सब जानते हैं, include a man, not sharpened, no. So सब जानते हैं, पूरी दुनिया में famous है वो. So answer is renowned. Renowned. इसके जो renowned illusions है include a man walking against the wind and a man trapped in a box. Now mimes often perform in groups. आजकल वो group में भी perform करते हैं and they have dash a variety of skills such as dance, acrobatics and gymnastics as well as mimes in their performances. उन्होंने ये सारी चीजों को mix कर दिया है. They have dash a variety of skills. Merged. Yes, they have merged a variety of skills. So that tells us a lot about the mime culture and the mime art. तो आज के जो words है, look at the word families. Please note them so you understand the difference. इसमें verb कौन सा है, noun कौन सा. Considerable and considerably. Considerably is the adverb. This one is the adjective. It takes considerable skill to perform mime. खासो time लगे, काफी सारा. The mime's audiences grew considerably as word of his skill spread. जैसे ही वो माइम फेमस हुआ, उसकी बातें फैली, वैसे ही उसकी ऑडियंस बढ़ी. नेक्स्ट इज इफेक्ट. यानी यहाँ पे जो है इफेक्ट, effect. His skill performance was the effect of years of experience. सालों का experience का असर था. Effect as a verb. He worked hard to effect change. Change यानी बदलाव लाने के लिए, बदलाव करने के लिए. दूसरा है affect. Affect यानी असर करना. AFFECT. That's a different one. Effective, असरकारक. Really effective mime performance makes the audience believe in illusion. उनको illusion में विश्वास आ जाता है. Effectively, असरकारक तरीके से. A skilled mime can effectively perform a variety of illusions. बहुत सारे illusions करके दिखा सकता है. Exaggeration, यानी जब हम कोई चीज बढ़ा चढ़ा के करते हैं. A mime uses exaggeration to create illusions. And exaggerate is a verb. A mime may exaggerate certain gestures. Exaggerated यानी जो चीज में बहुत मिर्च मसाला लगाया गया है. The exaggerated gestures of mime are used for humorous effect. Frail यानी कमजोर, right? The first one जो adjective है हमारा original, उसको देखते हैं. Humans are frail and mimes can make us laugh at this. Frailty यानी हमारी कमजोरी. Mimes can make us laugh at our own frailty. Frailness, it's a quality. The mime portrayed the frailness of old age. बुढ़ापे की कमजोरी दिखाई. Frailly यानी कमजोरी से. The mime moved freely around the stage as if he were 100 years old. वो acting करता. Portray यानी दर्शाना, और उसका जो दर्शाना जो acting character होता है उसको बोलते हैं portrayal. Charlie Chaplin is renowned for his portrayal of the little tramp character. Portrayer यानी जो करने वाला है. Mimes are often portrayers of human frailty. उनको human frailty को दर्शाने के लिए जाना जाता है.
portray. Mimes portray common situations in humorous ways. कई सारे situation funny way में अलग-अलग situations portray करते हैं. Portrayable यानी जिसको हम दर्शा सके, दर्शाए लायक. Almost everyday situation is portrayable through mime. हर एक जो घर की situation होती है वो mime में कर सकते हैं. Now when you are free, आप YouTube पे जाके mime act लिखिए, mime act, and you will see how mimes work. It's very interesting. Reminiscence यानी जो याद दिलाता है. Reminiscence of the early days of film would include stories of stars such as Charlie Chaplin and Buster Keaton. इनकी कहानियां जो है लोगों को past याद कराती. Reminisce यानी पुराने दिनों को याद करना, अच्छा फील करना. आप जब पुराने दिनों को याद करते हो, people like to reminisce about the great performers of the past. यानी past के जितने performers थे, उनको याद करना पसंद है. And reminiscent is the quality. When you remember somebody, you become reminiscent. Marcel Marceau's clown character was reminiscent of characters performed by earlier mimes, and it was a reminder. So now, here we have a word family. What you will be doing is, नीचे हमारे पास we have a variety of words, तो वही words को select करना है, right option को select करके we have to write the correct option. And we are stuck again. Give me a minute. Everyone enjoys watching mimes perform. सबको उसका performance देखना पसंद है. A really good mime makes a job look easy. उसका काम बहुत आसान लगता है. But in reality, it is impossible to dash the skill. What is it? Impossible to dash the skill. Exaggeration, exaggerate or exaggerated. वो skill को exaggerate करना बहुत impossible. So here the correct answer is our here exaggerate, right? The skill required to perform mime dash what? Mime effect, mime effective, mime effectively. Effectively. Correct. To do it effectively, it takes a dash amount of time to develop techniques and learn to perform them well. क्या आएगा? Considerable. Considerable. Yes, it takes considerable time, amount of time. Mimes need to be able to dash characters who will interest their audience. उनको ऐसे characters दर्शाने पड़ते हैं जो audience को पसंद आए. Portray. They need to be able to portray characters who will interest their audience as well as perform a variety of illusions. The best mimes can show us our dash. हमारी कमजोरियां दिखाते हैं while making us laugh at ourselves at the same time. Frailties, yes. They can show us our frailties. Although mime has changed over the years, सालों में बहुत बदले हैं, people still dash about some of the popular mimes of the past who have inspired today's performance. उनको आज भी याद करते हैं. People still reminisce. People still reminisce about कुछ लोगों को आज की तारीख में भी याद किया जाता है. Okay, and now the next part we have a listing, a small listing. Only 5 questions you have. Cool. So here is the listing. Listen to the talk and complete the notes below. Write no more than 1 word for each answer. तो आपके पास है mime. Perform without dash. किस चीज के बिना हमें इसे perform करते हैं? Dash of everyday activities such as climbing stairs. Stairs चढ़ने का mime होता है. Opening a window, जैसे बारी खुलता है तो वो एक्टिंग करता है कि वहां पे बारी है. तो वो इतना इंटरेस्टिंग लगता है जब वो माइम करता है कि वो चीज नहीं होने के बावजूद हमें लगता है कि यहाँ पे कोई इनविजिबल चीज है. That is the whole art. Use dash to show presence of objects. वो कौन सी चीज यूज करते हैं? And act out stories. कहानियां दिखाते हैं. Dash different characters and show the character in dash. So now I'll play the audio. Listen and answer. Unit 4, Culture, the Art of Mime.
Listen to a talk about mime. Mime is a type of performance carried out without the use of props or language. The mime's skill is the ability to make the audience believe that objects are present when in reality they're not. Mimes create illusions of everyday activities. For example, a mime may act out climbing the stairs or opening a window, and do it so skillfully that it almost appears that the stairs or window are really there. So skillfully that it almost appears that the stairs or window are really there. Mimes use gestures to show the presence of objects. For example, a mime may use his hands to outline the shape of a box, then climb inside the imaginary box. In addition to interacting with imaginary objects, mimes may act out stories in which they portray different characters. The stories usually show the characters involved in some sort of conflict, but it's all done in a humorous way, meant to make the audience laugh. All right, so perform without what? You have to answer one. Language. Language and Props. Props and Prop. language. Props and language. So answer is just here. The answer is just props, right? Otherwise, props and language both are correct. So you can write either on this or next, right? What is the next one? Illusion. Yes. Illusion, right? And illusion is in plural form, so there needs to be an S. Illusions of everyday activity use dash. What do they use? Gesture. Gestures. Gestures, right? Gestures. And then act out stories. What do they do? Portrays. Portray, right? Portray different characters, right? And show the characters in conflict. Conflict. Okay. So this is a writing task here. It's a table. Look at the table here. The chart shows information about ticket sales for performance for National Theatre over 6 months period. And then you have a speaking activity. Okay. Look at these are the 3 questions. When you see a live performance, do you prefer humorous types of performances or more serious types, and why? Who are some of the more renowned performers in your country? Do you enjoy movies that portray real people and events, or do you prefer movies that with made up characters? Right? So that is the speaking. That brings me to the end of this vocab session.